Hello viewers, this is Jubilee Saikia and you're watching My News NE. BJP MP and actor Kangana Ranaut begged the demolition by the Mumbai civic body at the studio where the comedian Kunal Kamra made the controversial remarks against the Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde. Here we are bringing you the full details. Kangana Ranaut supports action against Kunal Kamra's studio demolition. She differentiates Kamra's case from her own 2020 demolition. Ranaut criticizes Kamra's remarks defending Chief Minister Shinde. Kunal Kamra refuses to apologize, condemning the studio vandalism. Eknath Shinde asserts limits to freedom of speech. Yes, viewers, Bharatiya Janata Party MP and actor Kangana Ranaut begged the demolition by the Mumbai civic body at the studio where comedian Kunal Kamra made controversial remarks against Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde, while underscoring that it should not be compared to the illegal razing of her residence in 2020. What happened to me was an illegal act, but the actions taken against Kunal Kamra are lawful. There is no comparison between my case and Karma's case, Ranaut told reporters. The Mandi MP was referring to the demolition of her property in Pali Hill, Bandra in September 2020 by the BMC on grounds of unauthorized construction. She had not joined the BJP then, and the incident came amid a conflict with the undivided Shiv Sena. Kamra kicked up a row last week after he referred to Shinde as a Gaddar traitor while performing a parody of a Bollywood song at the Habitat Comedy Club. The jab was a reference to Shinde's rehabilitation in 2022 which split the Shiv Sena. Shiv Sena workers damaged the Habitat Comedy Club in Kher as well as the unconstitutional hotel in which premises the club is located. Officials from the Brihan Mumbai Municipal Corporation raised the temporary shade with hammers. Ranaut stretched the criticizing Shinde in the name of comedy was an insult to his work and struggles. The first time BJP MP said Shinde, who once drove an auto for a living, rose to become the chief minister through hard work and dedication. What credentials does Kunal Kamra have? He hasn't achieved anything significant in life, she stated. The Queen star said a similar trend was being in Bollywood where people are insulting actors under the guise of humor and entertainment. She further stated that these people call themselves influencers. Where is society headed for this 2-minute fame? We need to think about this. There could be repercussions. Would you stand by that when you are questioned legally? Amid calls by BJP leaders to issue an apology, including by Chief Minister Devendra Fadnavis, Kamra stated that he would not apologize. He also shamed the senseless vandalism at the studio where his show was held. I will not apologize. I do not fear this mob and I will not be hiding under my bed waiting for this to die down, Karma stated. Meanwhile, Eknath Shinde in his first comments on the role linked Kamra's dig at speaking at him to talking Supari contract to speak against someone. Freedom of speech is there, we understand his satire, but there should be a limit, the Deputy Chief Minister stated. Here is what BJP MP and actor Kangana Ranaut have stated. देखिए, जब आप कोई भी हो चाहे आप उसकी बात से अग्री करें चाहे नहीं करें, जिस तरह से वो मजाक उड़ा रहे थे मेरा और कहीं ना कहीं उस जो मेरे साथ हादसा किया गया था इलीगली उसका मजाक उड़ा रहे थे, तो आई थिंक कहीं ना कहीं मैं उस हादसे को इस हादसे से बिल्कुल नहीं जोड़ूंगी, क्योंकि वो एक इलीगल था जो काम किया था। ये जो है लीगली, आप कोई भी हो, लेकिन किसी का जो है अपमान करना, उसकी अपकीर्ति करना, देखिए जो लोगों ने
आप चाहे सरकार देखिए, सत्ता देखिए, जिस इंसान के पास उसकी इज्जत ही सब कुछ है, आप जो है कॉमेडी के नाम पर उनकी इज्जत उछाल रहे हैं, उनकी अपकीर्ति कर रहे हैं, उनके काम को डिसरिगार्ड कर रहे हैं। शिंदे जी जो है वो कभी किसी ज़माने में रिक्शा चलाया करते थे, आज वो अपने दम पर इतना आगे आए हैं। और ये उनके खुद की क्या क्रेडेंशियल्स है, कौन हैं ये लोग जो कुछ ज़िंदगी में कर नहीं पाए, जो ज़िंदगी में कुछ जिनका क्या, अगर मैं कहती हूँ अगर वो लिख सकते तो कुछ साहित्य में लिखे, कॉमेडी कुछ किसी तरह का कुछ, क्या ये लिटरेचर में कुछ लिखते हैं क्या? इनकी जो जैसे हमारी फिल्मों में भी मैं कहती हूँ कि कुछ ना कुछ एक कॉमेडी को लेके डायलॉग राइटिंग होती है, स्क्रीन राइटिंग होती है, गाली गलौज करना कॉमेडी के नाम पर, हमारे ग्रंथों का मजाक उड़ाना कॉमेडी के नाम पर, लोगों का मजाक उड़ाना, माताओं बहनों का मजाक उड़ाना। अभी आपने देखा किस तरह के ये इन्फ्लुएंसर्स आजकल खुद को कह रहे हैं। तो मैं कहती हूँ कि हमारा समाज कहाँ जाता जा रहा है, इन्फ्लुएंसर ये जो एक 2 मिनट की फेम के लिए कहाँ जाता जा रहा है, ये हमें सोचना है। और ये एक अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं जैसे फडणवीस जी ने भी कहा कि हमें कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। हम जो कह रहे हैं किसके बारे में, जब उसकी रेपरकशंस होती है, जब लीगली आपको पूछा जा सकता है, डू यू स्टैंड बाय दैट, तो ये बात को आप उस बात से बिल्कुल मत जोड़िए, क्योंकि वो जो था वो एक कम्प्लीटली एक इलीगल एक्टिविटी थी जो वो की गई थी। ये जो है कंप्लीट एक लीगल कार्रवाई जो है वो की गई है, तो दोनों का कोई भी एक दूसरे से कोई भी जोड़ा नहीं जा सकता। That's all for now. For further updates, keep watching My News NA.